we are going to talk about, and that too in very brief, about the liberalized and accelerated phase 3 strategy of COVID-19 vaccine. The government has come up with the phase 3 strategy of COVID vaccination. Okay, so yeah, the move is to allow state governments, private hospitals, and industrial establishments to procure vaccine doses directly. This is actually doses directly from the manufacturers has been under fire ever since it was announced. See, the details about this phase 3 strategy, I don't think it is of any concern to us. Fine, and the details is available on the PIB as well. But the crux is that in the phase 3 strategy, the government has allowed the state governments, private hospitals to come up into a deal with these manufacturers. फाइन, द वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स. सो एक मतलब 1-to-1 डील हो जाएगी स्टेट प्लेयर्स की और प्राइवेट प्लेयर्स की, विद लिटिल और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड since the time this scheme, this strategy has come up, this has been under fire. Fine. Now we are going to see what. Let's see. First of all, criticism. What are the criticism that the different actually sections have come up with? And the first criticism is that this approach would lead to confrontation between state governments seeking better deals from the manufacturers. That means, since it's a time of pandemic, fine, 1-to-1 deal with the manufacturers of the state government would lead to the competition between the state. Now, in this competition, some of the states may be having sufficient resources, for example, Maharashtra, Karnataka. But what about the states like Bihar, like Odisha, which are not that well developed? Fine. So, there will be actually inequality with respect to the procurement of the vaccines as well. Okay, so the first thing is this, that inequality will rise with respect to vaccines because there would be confrontation between the state governments as well. ठीक है, तो पहला क्रिटिसिज्म तो ये हो जाता है. दूसरा क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये आता है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन यूज़ इट स्केल टू स्ट्राइक बेटर डील्स विद डोमेस्टिक एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से दैट अगर यूनियन गवर्नमेंट ही प्रोक्योरमेंट कर रही होती या यूनियन गवर्नमेंट की ही अपनी डील होती और वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, ठीक है, वैक्सीन्स के, तो यूनियन गवर्नमेंट एक बेटर पोजीशन में होती डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के साथ या फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ में किसी भी डील को कैरी आउट करने के लिए, एज कंपेयर टू द स्टेट्स विच आर ऑलरेडी फेसिंग द क्रंच ऑफ रिसोर्सेज गिवन द COVID-19 pandemic situation. Fine. So these are two solid criticisms that have come up against this phase 3 strategy. Now we have to look at the positive side, that why the government has come up with this kind of phase 3 strategy, and actually what can be the positives that one can derive from this strategy. Okay, so the first thing is that it is a more decentralized planned vaccination strategy, as a centrally planned system is inadequate for managing this problem. See, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी जो हैं वो अपनी एक डील कर सकते हैं, तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि हम डिसेंट्रलाइज्ड कर रहे हैं पूरी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट को और पूरी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को. एंड एक्चुअली में देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी वैक्सीन्स दे रिक्वायर, फाइन, एंड अकॉर्डिंग टू द नीड, according to the demand, the supply can be managed. So this is the point of view of the union government. Apart from that, what is important is that it is better to get state governments and private players involved. The union government is of the view that it is better that in this decentralization process we are involving private players as well, and we are involving state governments as well. Fine. So we are giving better opportunity to these players so as to extract out a better deal with the manufacturers. Although central government will be involved in little और actually बहुत ही लो लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस इसमें रहेगा, ठीक है. बट ये एक और
बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है, जिससे कि ना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है, और वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी जो है और पूरी जो मास वैक्सीनेशन की हमारा जो विजन है, ठीक है, उसको हम एक्चुअली फुलफिल कर सकते हैं। तो ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का व्यू है। बट सेइंग सो दैट हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया या हमने प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गो like this only. Fine, it do have certain sort of responsibility as well. So there is an indispensable role of union government. And क्या हो सकता है? First is it can accelerate domestic production by getting all vaccine manufacturers to share know-how and ramp up the capacity, कि जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी जितनी भी उनकी नो हाउ है, टेक्निकल नो हाउ है, कैसे वैक्सीन्स बनानी है, उस चीज़ को एक्चुअली शेयर करें, ठीक है, और जो वैक्सीन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करें। तो इस चीज़ में मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो सकता है, ठीक है। सेकेंड थिंग व्हाट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डू इज़ व्हाइल द ग्लोबल सप्लाई स्क्वीज ईजेज, इट मस्ट क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द स्कैर्स सप्लाई विद इन द स्टेट। जैसे ही जो हमारा पूरा इस समय ग्लोबल सप्लाई का जो स्क्वीज़ है, अभी जो ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं लाइक यूएस है, रशिया है एंड यूरोपियन नेशंस हैं, अगर वो इस चीज़ पे मान जाते हैं कि हाँ हम जो है लाइसेंसिंग जो है वेव ऑफ कर सकते हैं कुछ वैक्सीन्स की, ठीक है, और जैसे जैसे ग्लोबल हमारी सप्लाई जो है इंक्रीज़ होती है हमारी कंट्री में वैक्सीन्स की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म क्रिएट करना चाहिए कि किस तरीके से ये जो वैक्सीन्स हैं वो अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिस्पेंसेबल रोल हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एक्सेलरेट करने में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, और ग्लोबल सप्लाई से जो भी हमारे पास में वैक्सीन से मेडिकल सप्लाईज आती हैं, ठीक है, उनका जो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, in these two things central government can play a very very important and critical role. So that's all in this video. I hope this is clear to you, and thank you.